हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन मैनिया। मैं हूं आपका होस्ट उमैर एंड वी आर बैक अगेन। तो हम आज क्या करने वाले हैं? हम आज कुछ डिफरेंट सोच रहा था। मैंने कहा कुछ डिफरेंट। वैसे ही मैं ऑलरेडी एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के टूर गाइड को स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें सिक्किम अभी चल रहा है हमारा। सिक्किम के बाद शिमला, शिमला के बाद दार्जिलिंग, देन दिल्ली। उसके बाद पहले हम इंडिया को कवर करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे जापान, टोक्यो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम ऐसे चलते रहेंगे। आज मैं काफ़ी टाइम से इंडिया की चीज़ें देख रहा था, इंडिया कंटेंट देख रहा था, इंडिया के फूड्स के बारे में भी देख रहा था। तो मुझे एक वीडियो नज़र आई और जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मैं वो आपको भी दिखाऊँ। तो हम आज देखने वाले हैं 15 फैक्ट्स अबाउट इंडिया। और हम सच में जानना चाहते हैं थोड़ा इंडिया के बारे में भी। अपने मुल्क के बारे में पता होता है इंसान को, फिर दूसरी कंट्री के बारे में पता करना ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट। Hello, A-Luxers, and welcome back to another fascinating video. Today we're looking at incredible facts you didn't know about the 7th largest country in the world, India. With a population of over a billion people, India is one of the most influential and powerful countries in the world. Its cultural history is particularly complex and detailed, spanning 4,500 years of predominantly Hindu philosophy and theology. Thousands of years later, modern India is profoundly different, with its own colossal film industry, a diverse population, and an astonishingly big workforce. Because alux.com is dedicated to becoming the world's best resource on the most interesting countries and destinations, we couldn't wait to bring you 15 things you didn't know about India. Number 1. Bollywood's highest grossing film made 27 times more than Hollywood's highest grossing film. For every 600 films Hollywood produces, Bollywood will make 1,000. They're the most profitable films, too, when you compare the numbers. Hollywood's highest grossing film was 2009's Avatar, which made $2.8 billion at the box office. In stark contrast, the Bollywood film Three Idiots brought in $76.81 billion. Now that's a profit. Number 2. Shampoo was invented in the 16th century, India. Derived from the Sanskrit champu, which means massage, the concept of shampooing was invented in India in the 16th century. Herbs and natural ingredients were used then rather than today's combination of modern chemicals and fragrances, in particular gooseberry, sapindus, and fruit pulp. When colonial visitors came to India, they brought the practice of shampooing and hair washing back with them to Europe. Number 3. Diamonds were first mined in India, and it was the world's greatest producer. India was the most productive diamond mining country in the world until diamonds were found in Brazil in the 18th century. There are now 3 active diamond mines in India, and the famous Kohinoor diamond was found in the 13th century. The 793-carat stone went from person to person and was eventually acquired by Queen Victoria during the British Raj in India. Number 4. Elephants in Kerala can treat themselves to a spa day. Punathur Kata Elephant Yard Rejuvenation Center provides elephants with baths, massages, and soothing pamper sessions. The spa caters to 59 clients and is a way of giving back to the sacred animal. Elephants play an important role in Kerala's temple processions and are a significant feature of the region, so they deserve a massage every now and then. Number 5. The largest religious gathering in India can be seen from space. Kumbh Mela is a Hindu pilgrimage which takes people to the banks of the Ganges every 12 years. The major event involves ritualistic bathing, devotional singing, religious discussion, and feeding the poor. The attendance figures had to be capped at 75 million, making it the largest pilgrimage on Earth. Number 6. Ancient Indian civilization is the oldest in the world. We often look to ancient Greece and ancient Egypt, but Indian civilization dates back to 2400 BC, when it was split into 16 monarchies known as the Mahajanapadas. There are even authenticated human remains that date back to 30,000 years in South Asia. The oldest Hindu texts were written between 2000 and 500 BC, as well as the first texts on science, medicine, and astronomy.
We actually owe the number 0 to Indian mathematics, who created the concept. Number 7. India is home to every major world religion and doesn't have a national language. Hinduism, Christianity, Buddhism, Islam, and Sikhism all have a place in Indian society, with the most dominant being Hinduism and Islam, covering 80% and 14% of the population, respectively. Judaism has existed in India for the last 2,215 years, and some of these smaller religions also featured, including Jain, Zoroastrian, and Baha'i. India also doesn't have a single national language because 1,652 dialects are spoken across the different regions. Number 8. A polling station is set up for just one voter in Gir Forest at every election. Every election, Marant Barandas Dashandas gets his local polling station entirely to himself because he's the only resident of Gir Forest. He's been voting in Indian elections since 2004 and never misses one now that he has his own personal polling station. Mahant is the caretaker for the one temple in the forest in Gujarat, a home he shares with the rare Asiatic lion. Number 9. The Indian government has used scaffolding to hide the Taj Mahal when airstrikes are predicted. During the Second World War and the Indian-Pakistan Wars, scaffolding was put up around the distinctive domes of the Taj Mahal to make it less obvious from above. They feared strikes by the Japanese Air Force during World War II, so hid their most famous landmark. More recent threats to the Taj Mahal include the rising levels of the Yamuna River, which has cracked the tomb underneath the structure. There have been predictions that the tombs could collapse at any time. Check out our video, 15 Most Expensive Man-Made Attractions in the World, to find out what ranks along the stunning Taj Mahal. Number 10. Indians invented navigation, yoga, the world's cheapest car, and thorium-based nuclear power. Indian society can take credit for some of the most important inventions in the world. They were the first to create the concept of navigation, over 6,000 years ago, using rivers and seas. Yoga was created 5,000 years ago and has roots in Hinduism, Buddhism, and Jainism. The world's cheapest car, the Tata Nano, which costs around 100,000 rupees, the equivalent of $1,400, and India is the home of the first next-generation thorium reactor. The country is aiming to produce 30% of its electrical power with thorium by 2050. Number 11. You can stay at the former Indian royal residence for $88,000 a night. If you want to stay at the lap of luxury, forget Paris and forget Dubai. India is the home of the most stunning palaces in the world. Once the home of the Maharajas, there are opulent palaces throughout the country, with some dating back hundreds of years. The Kumarakam Lake Resort hosted Prince Charles's 65th birthday, and the 450-year-old Samod Palace in Jaipur has hosted famous faces from all over the world. Number 12. King Jai Singh of Alwar snubbed Rolls-Royce in the best possible way. India has a long and colorful history of quirky monarchies and extravagant kings and queens. The King of Alwar in northeast India was insulted by a Rolls-Royce salesman when he visited a showroom in London. A very proud man, he ordered a whole fleet of Rolls-Royce cars and gave them to the city's waste department so they could use them to transport rubbish throughout the city. Number 13. 1 million Indians are millionaires. India has one of the most dramatic wealth gaps in the world, with 35% of the country living below the poverty line. Those who live way above it live a very different kind of life. The richest Indian in the world is Mukesh Ambani, who has a net worth of $53 billion. The 59-year-old made his money in the oil and gas industry, and his billion-dollar home recently made headlines because he chose to build a 27-story skyscraper instead of a sprawling mansion. Number 14. The first account of plastic surgery was found in an ancient Sanskrit text. One of the first medical texts was the Sushruta Samhita, which can be dated back to the 6th century CE. It's one of the very first examples of a medical text and discusses surgery, incisions, skin grafts, and nose reconstruction. Britain's first nose job wouldn't be performed until 1814, a worrying 80 years before the Sushruta Samhita would be translated. Number 15.
One of India's most extravagant weddings caused controversy because it was too extravagant. Lasting 5 days and costing $74 million, dollars, हाँ. the wedding of the daughter of a prominent businessman made headlines in 2016 for all the wrong reasons. The $2.5 million wedding sari, Bollywood royalty in attendance, and gold Bangalore palace setting was denounced as an obscene display of wealth. Millions of Indians live in poverty, so the wedding was criticized for being in poor taste. There are many stereotypical images of India, but there's so much more to this incredible country than many of us know. The center of many industries and the world's biggest democracy, India has influenced art, literature, science, and medicine potentially more than any other nation. If you could take a trip to this beautiful, fascinating country, where would you find yourself? In a gorgeous Maharaja's palace surrounded by palm trees and rural countryside, or a modern apartment in the thick of busy Mumbai? Oh, you're still here? Here's another bizarre and incredible fact about India. About 40% of the Indian population is vegetarian, making it the largest veggie population in the world. Many choose to not eat meat for spiritual and religious reasons, with beef and pork products often ruled out of their diet. Vegetarianism is so influential that KFC, McDonald's, and Pizza Hut had to introduce vegetarian menus for their Indian franchises to cater to the population. The country with the fewest vegetarians is Portugal, where just 1.8% of the population have cut meat from their diet. Thank you for spending some time with us, Aluxer. Make sure to subscribe so you तुम लोग ये मुझे बोलोगे तो मैं वीडियो में बोल क्यों नहीं रहता असल में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई तो बस वो जो इमेजेस थी उसमें से थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा एक चीज़ खैर उसको छोड़ो बहुत यूनिक फैक्ट्स थे यार मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक फैक्ट्स थे मतलब एक कंट्री के अंदर ये सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मोर देन 100 मिलियन पॉपुलेशन है उनकी और फिर उनकी पॉपुलेशन होने के बाद डिफरेंट 62,000 लैंग्वेजेस बहुत मैटर करती हैं यार 62,000 लैंग्वेजेस हमारे मुल्क में मुझे मुझे ये भी नहीं पता मेरे मुल्क में मतलब मेजर तो पता है लेकिन अगर उसके हिसाब से और देखी जाए तो और मुझे नहीं इतना ज़्यादा लेकिन 62,000 लैंग्वेजेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है आप ये समझ लो 62,000 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं अगर आप एक हर लैंग्वेज के एक पर्सन में खड़ा करो तो 62,000 पीपल्स आर सीरियसली माइंड बगलिंग फिर अब संस्कृत के अंदर इनका है कि मतलब प्लास्टिक सर्जरीज का आई डोंट नो क्योंकि मैं इतना पीछे से पैदा हुआ नहीं मैं अभी का हूँ मॉडर्न हूँ मैंने इस चीज़ के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की लेकिन मैं रियली रिसर्च करना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर मुकेश अंबानी को सब जानते हैं टाटा नैनो को भी मुझे पता है टाटा नैनो बहुत चीपेस्ट कार है वहाँ पे और ख़ास तौर पर थर्मल न्यूक्लियर प्लांट दिस इज समथिंग डिफरेंट मतलब अगर इंडिया एक चीज़ बना रहा है तो सीरियसली बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत यूनिक भी है और भी मैंने बहुत से फैक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में देखे थे और वो बहुत मज़ेदार थे कुंभ का मेला जो उनका होता है वो भी बहुत बड़ा है क्योंकि वन ऑफ वो एक वीडियो मैंने देखी थी मुझे याद नहीं आ रही मैंने बहुत पहले देखी थी और उस मेले के अंदर इतने ज़्यादा लोग कि वो वीडियो एरियल शॉट की थी और एरियल शॉट में वो प्रॉपर नहीं हो रहा था वो जब जितना जितना वो ऊपर जाया जा रहा था वो एरियल शॉट में उनको कवर नहीं कर पा रहा था जितना कि उस वीडियो में भी ये वो फैक्ट में बोल रही कि आप सैटेलाइट से देख सकते हो कितने लोग हैं वहाँ पे सीरियसली यार मतलब 100 मिलियन अगर आपके पास लोग हैं और आपके मुल्क के अंदर के अलावा कोई इवेंट है जो एक बहुत बड़ा है पता है हिंदुओं के लिए वो बहुत बड़ा इवेंट है जितना हमारे लिए हज होता है उम्रा होता है तो 100 मिलियन लोग हैं तो फिर तो काफ़ी पॉपुलेशन होगी होगी अब कॉन्सर्ट तो है नहीं वो दूसरी चीज़ मोर देन 1 लाख हाँ मोर देन 1 लाख मिलीनियर्स है इनकी कंट्री के ज़्यादा मेरा अंदाजा 1 लाख से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं अब तो बहुत है तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि मतलब ज़रूरी नहीं है 1 लाख ही है अब वो इन्होंने स्पेसिफाई किए होंगे कौन कौन से हैं कौन कौन से एक लिस्ट बना ली होगी उस हिसाब से देख लिया होगा इतने हैं
लेकिन अगर आप देखा जाए तो बहुत से होते हैं इन फ्यूचर बनने वाले होते हैं, बहुत से होते हैं जो डिजास्टर्स की वजह ख़त्म हो चुके होते हैं, ऐसा है। लेकिन थर्ड थिंग वो ताजमहल वाली बात, ताजमहल का मैंने आर्टिकल बहुत पहले ही पढ़ चुका हूँ कि ताजमहल कभी भी कोलैप्स हो सकता है। उसकी जो आप ये कह सकते हैं क्या नाम है फाउंडेशन हैं वो काफ़ी क्रैक हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं पानी के फ्लो की वजह से। ऊपर से लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज़ को केयर नहीं की जा रही। इसी तरह एफल टावर का भी कुछ ऐसा ही इशू है, एफल टावर का भी यही आ रहा है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये तो लैंडमार्क्स हैं, जब कभी है कभी नहीं है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं है और हमेशा रह नहीं सकती। लेकिन जो भी है मैं इस चीज़ को अगर बैठ के बात करने बैठूँ इन फैक्ट्स के ऊपर तो नो डाउट मैं इन फैक्ट पर बात नहीं कर सकता, ये बहुत लॉन्ग एंड डीप डिस्कशन है। लेकिन आई रियली एंजॉय इट, मतलब किसी कंट्री के बारे में जानना बहुत कम है मुझे पता है, लेकिन जितना है अभी इतना ही काफ़ी है। बाद में और देखूंगा और सर्च करूंगा इन चीज़ों के बारे में, जो मुझे अच्छा अगर समझ में आया कोई चीज़ तो मैं तुमसे भी शेयर करूंगा। सो सीरियसली यार, थैंक यू यार गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मुझे पता है काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास इंडिया से, काफ़ी लोग मुझे इंडिया से भी देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, इंडोनेशिया से कंट्री से देखते हैं। तो गाइस सब्सक्राइब करो, करो सब्सक्राइब, और लाल बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हारे लिए और वीडियो बनाऊं, और कमेंट भी करूँ। ओके, टेक केयर, बाय। Yeah.